हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करेंगे विराट कोहली का थर्ड पार्ट कंप्लीट। इसके सेकंड पार्ट में मैंने विराट कोहली का चश्मा और नोज और मूंछ पर शेडिंग करी थी, और इस पार्ट में मैं गाल और स्किन और दाढ़ी पर शेडिंग करूंगा। और मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि शेडिंग कैसे करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर आ पाए। तो चलो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, अभी मैं इसकी स्किन के लिए मैं ले रहा हूँ मीडियम चारकोल पेंसिल। आप इसे ले सकते, जैसे आपको फ़ोटो में दिख रहा है रेफरेंस फ़ोटो में, वैसा ही आपको जिस तरफ डार्क वैल्यू है उस तरफ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है, और जिस तरफ कम वैल्यू है उस तरफ लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है। और हाँ, इसी तरह आपको पूरा स्केच को कंप्लीट करना है। तो चलो वीडियो में एंजॉय करते हैं। ये आपको डिटेलिंग का काम दिख रहा होगा रेफरेंस फ़ोटो में। डिटेलिंग भरने के लिए आप किसी भी इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो जो नॉर्मल इरेजर रहती है उसे कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप पर क्ले इरेजर है तो उस पर उसका भी यूज़ कर सकते हो आप डिटेलिंग के लिए।
अभी आप विराट कोहली के बियर्ड्स में देखो, जहाँ दाढ़ी है उस तरफ हाईलाइट से आ रहे थोड़े। तो आपको किसी भी इरेजर से हाईलाइट देना है, या तो नॉर्मल इरेजर पर करके दे सकते हो, या पर जो सी इरेजर है उससे आप हाईलाइट दे सकते हो धीरे धीरे। Fire went out, lights went